जो लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दिन के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं, ये जुगाड़ सिर्फ उन लोगों के लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बता रहा हूँ, शुरू में बता रहा हूँ कि दिस इज जुगाड़, ठीक है, जो एक प्रॉपर वे होता है, जो एक रिकमेंडेड वे होता है। जो लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दिन के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं, ये किसी को कोई पैसे शैसे दे उन लोगों के लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बता रहा हूँ, शुरू में बता रहा हूँ कि दिस इज जुगाड़, ठीक है, जो एक प्रॉपर की जरूरत नहीं है। हजार जो लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दिन के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं, ये जुगाड़ सिर्फ उन लोगों के लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बता रहा हूँ, शुरू में बता रहा हूँ कि दिस इज जुगाड़, ठीक है, जो एक प्रॉपर वे होता है, जो एक रिकमेंडेड वे होता है। जो लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दिन के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं, ये किसी को कोई पैसे शैसे दे उन लोगों के लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बता रहा हूँ, शुरू में बता रहा हूँ कि दिस इज जुगाड़, ठीक है, जो एक प्रॉपर की जरूरत नहीं है। हजार
जो लोग अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दिन के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं, ये जुगाड़ सिर्फ उन लोगों के लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बता रहा हूं। वे होता है जो एक लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बता रहा हूं। वे होता है जो एक लिए है। जी तो वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज एक ऐसा जुगाड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बता रहा हूं। सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, बल्कि हजार क्या एक दिन में 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी आप इस जुगाड़ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो जुगाड़ होते हैं वो हमेशा फ्रेश चैनल के ऊपर, न्यू चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आप लोगों की ऑलरेडी फेस वैल्यू है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, उसके ऊपर इस तरह का पंगा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई बहुत ही मजे का तरीका है। चले जरा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस समझाता हूं। लेकिन अगेन दिस इज जुगाड़, नॉट आर रिकमेंडेड प्रोसीजर। ओके, और जिनको सिर्फ सब्सक्राइबर की ठरक होती है ना, सब्सक्राइबर्स पूरे करने की जिनको ठरक होती है, उनकी ठरक इस वीडियो के बाद मट्ठी हो जाएगी अगर वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आए जरा जी। तो आप Everbee, best Etsy product research tool for Etsy sellers. In seconds, find the best and most in-demand products to sell. तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है,
आप लोगों ने आ जाना है जनाबे वाला यूट्यूब पे आने के बाद आप लोगों को ये सामने एक पेप्सी का ऐड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने बेशक क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसकी साउंड कर देनी है बंद, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसकी साउंड बंद कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक काम करना है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और आप लोगों ने क्लिक करना है सेव फ्रॉम नेट। ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे वापस आएँ इस जगह पे और यहाँ पे आके आप लोग लिखें जैज़ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सुपर बनो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, इसको भी आप लोगों ने कर लेना है जनाबे वाला डाउनलोड और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है जोंग के, फॉर एग्जांपल जोंग का लिख दें, ठीक है। जोंग की भी ये तकरीबन 21 सेकंड वाला जो ऐड है ना, ये आप लोगों ने उठा लेना है। अब आप लोगों ने अपना कोई भी एडिटर ओपन कर लेना है, लाइक काइनमास्टर, VN वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि जिनके पास लैपटॉप है वो कम से कम एडोब प्रीमियर के ऊपर काम करें, ठीक है। एडोब प्रीमियर के ऊपर काम नहीं आता, सॉफ्टवेयर नहीं मिलता आप लोगों को, बिल्कुल हर चीज़ फ्री में, ये पेड कोर्स था फ्री में आप लोगों को मैंने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से एडोब प्रीमियर पे काम होता है, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स है फ्री में आप लोगों के लिए, मौज करो। जितनी देर में वो ओपन होता है यहाँ पे आके एक और हरकत आप लोगों को छोटी सी कर देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आके लिखना है PTV स्पोर्ट्स, ठीक है। PTV स्पोर्ट्स लिखने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है इमेजेस के अंदर और इमेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसका ये एक जो लोगो है ना, ये भी आप लोगों ने उठा लेना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने कर लेना है सेव जी। तो अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, वही तीनों फाइलें जो आप लोगों ने डाउनलोड की थी ना, ये वाली, ठीक है, इनको उठाना है और उसके बाद ये इसकी PNG को उठाना है और उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको कर देना है ड्रॉप, ठीक है। तो तीनों मीडिया यहीं पे आ जाएंगे, ओके हो गया। इसको आप लोगों ने उठाना है, ये जो लोगो है ना PTV स्पोर्ट्स का, इसको आप लोगों ने उठाना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों ने साइज़ छोटा कर देना है। आप लोग अपने जिस भी एडिटर के अंदर करेंगे वही आप लोगों ने करना है, बाकी जुगाड़ आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने सारे क्लिप्स को ज्वाइन करके ऊपर यहाँ पे लोगो लगा के अपनी वीडियो कर लेनी है सेव। तो जितनी देर में ये सेव होती है आप लोगों ने फौरन से जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है OBS, ठीक है। ये लिखेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसको आप लोगों ने फौरन से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना, थोड़ा सा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 10 डाउनलोड हो जाएगा, ओके। आप लोग सिंपली फिर उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर की शक्ल है, बिल्कुल भी नहीं डरना, बहुत आसान काम है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पहले एक सोर्स बनाए हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नए सिरे से हर चीज़ समझाऊँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो यहाँ प्लस का साइन आप लोगों को नजर आ रहा है, ऐड सोर्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया सोर्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। इसका नाम बेशक दे दें 1 2 या 1 दे दें, ठीक है। और उसके बाद इसको ओके करें। यहाँ पे अब वो आप लोगों को कह रहा है कि भाईजान अपनी फाइल चूज़ करो, तो यहाँ पे वो आप लोगों ने फाइल अभी मैंने सेव की है, मैंने जुगाड़ के नाम से सेव की है, तो मैं निकालता हूँ, किधर गई जुगाड़, ठीक है, मैंने जुगाड़ के नाम से सेव की थी, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लूप का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने कर देना है क्लिक। करने के बाद आप लोगों ने सिंपली किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना और इसको कर देना है ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों से साइज़ मांग रहा है, साइज़ आप लोगों ने बेशक यहाँ पे ये इतना दें, ये इतना करके उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग रखेंगे तो आप लोगों ने शिफ्ट दबानी है और फिर इसको खींचना है, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेम के ऊपर आ जाएगा, ओके हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है गूगल पे वापस, यहाँ पे आना है आप लोगों ने और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि ICC लाइव स्कोर, ठीक है, ICCcricket.com, ठीक है, जो भी है ICCcricket.com, ओके। यहाँ पे जो भी मैच होगा ना हम वो मैच निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान का इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ये देखें ये मैच चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने करना है क्लिक। यहाँ पे ये देखें ये पूरा फ्रेम जो है ना, इस पूरे फ्रेम को हम लोगों ने करना है यूज़। कैसे, इसको हम उठाएंगे और एक न्यू ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये सारा चलें। अब आप लोग आएंगे वापस दोबारा OBS के अंदर, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि ब्राउज़र को हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ओके। यहाँ पे अब वो कह रहा है जी कि URL दो, ठीक है, यहाँ पे ये URL हमसे मांग रहा है, तो हम आएंगे वापस ये इस जगह पे और यहाँ पे आएंगे, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+C करने के बाद इधर आएंगे और Ctrl+V करेंगे और V करने के बाद हम इसको करेंगे ओके। जैसे हम इसको ओके करेंगे, ये अभी आप लोगों के सामने ये देखें ये एक फ्रेम निकालेगा, थोड़ा सा सब्र करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा अगर इसको यूं करेंगे तो ये सारा इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे ना और आल्ट का बटन दबाएंगे, आल्ट का बटन दबा के फिर इसको आप लोग नीचे करते आएंगे तो ऊपर से ये इसको क्रॉप करता आएगा,
और यहाँ से करते जाएंगे, ये इधर से क्रॉप करता आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने यहाँ से भी थोड़ा सा क्रॉप कर देना है, ठीक है। ये इधर से कर दिया क्रॉप, अब इसको आप लोगों ने कर देना थोड़ा सा छोटा, छोटा करने के बाद आप लोगों ने इसको लगा देना इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया जी हमारा टनाटन। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है सेटिंग के अंदर, स्ट्रीमिंग की सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है और इसको क्लिक कर। अब जैसे जैसे स्कोर इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अपडेट होता जाएगा ना, जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट होगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने मतलब कि वापस हम कहाँ गए, ये इस जगह पे सेटिंग्स में आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे आप स्ट्रीम के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ऊपर से आप लोगों ने यूट्यूब ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यूज स्ट्रीम की इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, वापस आना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम इस चैनल को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सिंपली हमें लाइव जाने की ऑप्शन नजर आ रही है, लाइव के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें कह रहा है जी कि वेलकम टू लाइव राइट नाउ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। बिल्ट इन कैप नो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर दूसरी वाली ऑप्शन ये करते हैं, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने इसको कर देना है एडिट करके जिसका भी मैच चल रहा होगा ना, अभी जैसे आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप चल रहा है और किसका मैच चल रहा है, चेक कमेंट पेन इसको छोड़ें आप लोग, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मतलब कि आप लोगों ने लिख देना है वर्ल्ड कप पूरा सही करके आप लोगों ने इसकी टाइटल देना, ठीक है। वर्ल्ड कप 2023 फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, फलाना मैच जो भी है, ठीक है। ये करके उसके बाद सिंपली आप लोगों ने आना है ये इस जगह पे थंबनेल पे, ठीक है। थंबनेल अब आप लोगों ने यहाँ पे चेंज कर लेना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने आना गूगल पे और आप लोगों ने यहाँ पे आके लिखना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चेंज पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में ये देखें, ये एक बड़ी ही अट्रैक्टिव सी पिक्चर है, अट्रैक्टिव सी पिक्चर मैंने लगा दी, ठीक है। आप लोगों ने मतलब कि आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लगा के आप लोगों ने डन हो गया, ये काम करने के बाद इसको कर देना है आप लोगों ने सेव करने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे ये देखिए स्ट्रीमिंग की आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। स्ट्रीमिंग की को करना है आप लोगों ने कॉपी करने के बाद आप लोग आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आके आप इसको कर देंगे डिलीट करने के बाद इसको अपनी स्ट्रीमिंग की थी वो आप लोगों ने पेस्ट करने के बाद ये थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी हो गई है, इसको उठाओ इस तरीके से, अप्लाई पे क्लिक करो और उसके बाद ओके पे क्लिक करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी तक आप लोगों की स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पे देखें 75 पे 3 आउट, उस वक्त 69 थे या समथिंग थे, ठीक है। तो अब जैसे ही हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिंपली ये होगा कि यहाँ पे आप लोगों की स्ट्रीमिंग जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग मेरी एक बात जरा गौर से सुने की ये बात है कि डेली जो भी मैच होगा उस मैच का आप लोगों ने थंबनेल लगाना है और इसी तरीके से स्ट्रीमिंग चलानी है आप लोगों ने। लोगों पर इश्तिहार देखते रहेंगे, वो समझेंगे शायद वक्फा चल रहा है, फिर उसके बाद जब उनको समझ आएगी कि वो नीचे स्कोर है तो उससे आप लोगों का वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब वॉच टाइम आप लोगों का बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की स्ट्रीमिंग जो है वो रैंक करती जाएगी और जब मैच होता है तो आप लोगों को पता है कि अन्य वाइज की सर्चिंग हो रही होती है, ओके। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था ना कि चेक कमेंट पिन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक कमेंट पेन, इसके अंदर आप लोग किसी जगह पे जहां दिल करे चाहे ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, फेसबुक पे लेके जाए, अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर स्ट्रीमिंग चला के और एड शेड लगा के वहां पे ट्रैफिक ले जाए, जहां दिल करता है यहां से कमेंट पेन के अंदर वो लिंक दे दें और पब्लिक को कहे कि चेक कमेंट पेन, वो वहां पे जाके जहां दिल करे आप उसको ले जाए, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं और एडिट के अंदर जाते हैं, एडिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अनलिस्टेड की इसको आप लोगों ने कर देना है पब्लिक करने के बाद इसको करना है डन, इसके बाद इसको करना है सेव करने के बाद यहाँ पे आना है स्टार्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें स्ट्रीमिंग हो गई आप लोगों की स्टार्ट, ठीक है। आप लोगों का काम है चुप करके आराम से बैठ के अपने बिस्तर में घुस के मोबाइल के ऊपर बैठ के मैच देखें, जो मर्जी करें। जैसे जैसे स्कोर यहाँ पे अपडेट होगा, ये इस जगह पे, ये देखें किधर गया, ये इस जगह पे, जैसे जैसे यहाँ पे स्कोर अपडेट होगा वैसे वैसे स्कोर यहाँ पे अपडेट होगा और जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट होगा वैसे वैसे आप लोगों ने जो लाइव स्ट्रीमिंग की हुई है, ठीक है, किधर गई हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, यहाँ पे भी देखें अपडेट होता जाएगा। तो भाई सुकून से ये देखें करंट व्यूवर भी मेरा एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें आप लोगों के सामने चल रही है लाइव स्ट्रीमिंग, सुकून से चल रही है और सब्सक्राइबर कितने हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो भाई दिस वाज अ जुगाड़, आप लोगों को एक जुगाड़ था जो शेयर करना था, होप सो जुगाड़ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद। She was gonna pick someone else. What's that? It's pizza. Order for Ari. Bitter. Well. Use shout-outs and kudos to share news and recognize great work. And check in with your employees for their feedback using surveys and polls.
Slightly short. Goes towards deep square leg. Tells me he isn't premeditating. He's somebody who likes to premeditate a lot. He looks to either run down or he looks to play the pickup when he isn't getting boundaries. But today, he's just played instinctive shots, which tells me A, the pitch is brilliant to bat on. B, he's also carried the confidence that he's got from the previous 2 games. He's just been timing the ball so beautifully, and the thing that's really stood out for me is goes towards deep square leg. Tells me he isn't premeditating. He's somebody who likes to premeditate a lot. One of the he looks to either run down or he looks to play the pickup when he isn't getting boundaries. But today, sure you're getting value for he's just played instinctive shots, which tells me A, the pitch is brilliant to bat on. B, he's also carried the confidence that he's got from the previous 2 games. Or some batters actually look at the gap, so they've just programmed them into that internal computer. To leg by down to 45. Some batters just look at the gap so they can just put that information into their internal computer, so then just when they're reacting, they'll just naturally just make that little adjustment to make sure that the ball does go into the gap. Not going to want to be changing the bat at this point in time because it's working very, very nicely for him at the moment. Doing everything he can to keep going with that bat. It's the wonder bat at the moment. Just a couple of runs from a very well controlled guide. Highest power plays, first power plays in World Cups for Afghanistan, 61. They're long past that at this wonderful facility. In all ODIs, their highest power play score 89. Wonderful crowd here as well today. They've gotten away with that just pace off a little full. 10 overs complete, 79 without loss. With Sky Store, you're in for an explosive mission. Our lives are the sum of our choices. This mission of yours is gonna cost you dearly. Buy and keep for $13.99. He knows the best way to get to me. Through all of you. None of our lives can matter more than this mission. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Available now in Sky Store, the ultimate movie collection. In the capital city, and a ground that has produced a lot of runs. In the first power play again, 79 without loss if you've just joined us. In Afghanistan. Adil Rashid into the attack, replacing Curran. Adil Rashid is going to be very aware of the fact that Gurbaz is strong of the sweep. And in one-day cricket, he's an even better sweeper because he just has a one fielder out right now at deep square leg. And he tends to hit the ball between short fine leg and deep square leg a lot. I reckon it won't be too long before you get mid-on up and have deep square leg and deep mid-wicket back. That would be a better field for Adil Rashid. In what's 9 fourths and 2 sixes in the first power play. Yeah, it's been excellent batting from the Afghans. Just like they haven't really taken too many risks at all. Just the loose balls that the English have served up. And goodness me, Sidran and Gurbaz have just been so brilliant at putting those loose balls away. And a very nice batting surface here in Delhi. Very fast outfield as well. Afghanistan are really capitalising at this point in time. They want to continue this momentum on.
It's a half-century for Ramanullah Gurbaz. His third in ODIs, in addition to 500s in this format. What a young player at 21 years of age, making his mark in the World Cup. And he certainly should be smiling, because, wow, what an innings. He has really hit the English so hard in this power play. And now, in the second power play, straight into finding the boundary. Walking onto the field today, the outfield is just incredibly hard. It's like concrete, so the ball is always going to absolutely race away to the boundary. They've not been spotless in the field today from the very first ball of the innings. There have been a few bloopers for England, but Ramanullah Gurbaz is shining. One thing that Gurbaz is very good at as well is converting these starts, going and getting a big score. At some point out in the next over, I want to talk a little bit about how important that is, converting. 86 without loss. Michael Atherton called it before on air. It's been a batter's tournament so far. Yep, that's right. Wish I'm not going to be really liking what I'm going to say, but it is true. The batters have had it really good so far. Some lovely wickets to bat on, and they've made best use of it. Add to the fact that when you bat second, there's a bit of dew, it becomes even easier at times. But England bringing their most important change, but this is a change that they need to be wary of, because high pace in this pitch without variations can go for plenty. Mark Wood needs to be very proactive here. Make sure he shows the batter that he has a slow one real early. Yeah, I get you. I get Dinesh Karthik, and I get Michael Atherton and Shane Watson. I get you as well, that you're seeing the hundreds. There was a game here where we had 300s in the innings or something like that. But the best bowlers, the best will stand out. Jasprit Bumrah has been superb. He reminded us, Bumrah, of what we missed over the last 12 to 13 months. Mark Wood, as you said, in this tournament, the fastest of the bowlers, bowled well in the last game. And that's the point I was alluding to, Bish. As a bowler with extreme pace like Mark Wood does, he needs to get into the batter's mind here. The moment he bowls a slow one early in his spell, the batter is thinking that that's a ball that's up his sleeve. Then you think very differently as a batter. Whereas if you just keep bowling 150 clicks, yes, it is fast, but it feels really good to bat on such wickets. Ask the man sitting on my left. He's taken on plenty of bowlers who bowled at that speed, and he'd rather have a bowler who just bowls fast on this kind of pitches than someone who varies his pace a lot. And we've seen that already with Topley. He's done that beautifully today. Top class. Ramanullah Gurbaz continues on his way, using that pace and that width and height. Mark Wood, he's going to have to be right on the money. He's going to have to continue to not give the batters any width or any length, because the ball is just going to continue to fly here in Delhi.
It's a beautiful shot from Gurbaz, just allowing the ball to bounce. And because he allowed the ball to come to him, meant that without even trying, the ball was able to generate a lot of power and a lot of speed off the bat. What's really stood out to me is Jasprit Bumrah and even Josh Hazlewood in the first spell against India, and also Mitchell Starc. And you've seen South Africa with their quick bowlers, with Ngidi, Rabada and Jansen. When the bowls are bowled incredibly well and just hit the top of the stumps with energy, they've been really hard to be able to get away and been incredibly effective. You saw that with Bumrah yesterday. He was relentless. He hardly bowled a loose ball. He didn't bowl a loose ball really at all. It seems like Bumrah has not made a mistake with execution throughout this whole tournament so far. It's when the bowls have got it slightly wrong because of these grounds the way they are, smaller outfields. It means that the runs have been coming thick and fast. This has just been this has been exceptional batting. Yes, England haven't been in their absolute best, but goodness me, Gurbaz just did not let the English opening bowlers settle at all. And this is a good innings, as you will see. Shots all around the ground, front foot, back foot. Exceptional, and he is not finished yet. .93 without loss. Lovely history around the AFG Stadium. England searching for that bowler that will give them some breakthrough. Topley's been good with his economy. In the AFG Stadium, we've got a Gautam Gambhir stand. Bishan Bedi stand, Mohinder Amanat stand. Virat Kohli, Adil Rashid. Maybe get outside the line of off stump. It's very challenging for the spinners through this middle period when there's just only 4 people out. The mid wicket is always up to any spinner really, especially a leg spinner. So the sweep shot is always going to be one shot and one area over mid-wicket that the batter is going to be eyeing off. See, Gurbaz got down early, trying to line up that leg side. And with that shorter side on the leg side of Adil Rashid, he's going to slightly always err a little bit wider outside off stump, because 58 metre square boundary there is going to mean there's not much room to move at all. Short side of the ground, 58 metres, and Gurbaz taking advantage of it to their delight and their joy. 100 up for Afghanistan, and we're only in the 13th over. There is no room to move at all for Rashid.
It's a fraction full, a fraction straight. And Gurbaz just flicked that over the mid-wicket boundary. Continuing on, just reacting to the ball, just putting the ball away and hitting it wherever it should go. What a start for Afghanistan. 102 without loss, 13 gone. Well, it's been a brilliant start this by Afghanistan. England very sloppy in the opening 13 overs, but take nothing away from this opening partnership. Gurbaz in particular, 20-year-old lighting, 21-year-old lighting up this stadium, 67 from 45. If ever they needed the X factor of Mark Wood to have an impact, it's now. He'll charge in and try and make life uncomfortable for these two openers. Wonderful opening partnership of 102 so far. Again, there is protection out there though from Harry Brook. Very successful opening combination in ODIs for Afghanistan. Gurbaz and Zadran, 19 innings together. Top of the order, 850 runs. They've made an average of 45. That was before this, so 953 now, approaching that 1,000 mark. A couple of centuries, 250s. Oh, good quick delivery again. Tell you what though, England have been sloppy, haven't they? Right from the first ball, 5 wide, sent down the leg side by Chris Wokes. There was a free hit and a no ball conceded by Sam Curran. The misfield from Bairstow at backward point that gave away a boundary that should have been stopped. Very sloppy start from England. For me, it's been the areas that they've hit, the width that they've offered up to Gurbaz. I mean, he's just been able to go on his merry way. Zadran, he's only got 24-35, so he hasn't got away from them at all, but they haven't learned the lesson about the fact of being tight on the stumps to Gurbaz. You walking a little taller this morning, Simon, as a New Zealander? Did you stay up late last evening? Yes, I did. I did stay up late, as Sean Pollock will be doing tonight, I'm sure. Hoping. Praying, perhaps. There's only a couple of countries that can actually do the double, isn't there? The cricket and the Rugby World Cup. France certainly aren't one of them. Australia are no hope in the rugby. Wouldn't write them off in a cricket tournament though, ever. They can't do the double, as their rugby team have been appalling. New Zealand and South Africa, still a chance. England, still a chance.
albeit perhaps slightly slimmer than the other two. That is a proper haircut, that. Well, it's not been cut, has it? It's a proper hairdo. At third, and will end the Mark Wood over. Pretty tidy one. 106 without loss. That is drinks. Get more with MG's electric range. Get noticed in the MG4 EV or the stylish MG ZS EV. Book a test drive now. Welcome to my crib. Let me show you what I've done with the place. This bed grows with the kids. Show off your savvy. IKEA, the wonderful everyday. Sky Cinema. Was that a chair? For years, Sky brought amazing cinema to you. Now it's time to bring you to the cinema with 2 free tickets every month. You only get that with Sky Cinema. Shh, sorry. Activia presents The Amazing Gut from A to Z. Hey, guts alive, beautiful biome, digest and drive. Wanna feel good? Start from the inside with live coaches. Nice, open wide for tasty victory with extra yummy yogurt that makes your tongue zing. Your gut is where it all begins. Activia. Not a bad place to bat either, Michael Atherton. Boy, is it ever. It looks a fantastic pitch. We've already seen 4 individual hundreds here in this year's World Cup at this ground. The 6 that took Afghanistan to the 100 mark was the 50th on this ground, so it's no question which it favours, bat or ball, but you've got to take advantage of those conditions. And Gurbaz and Ibrahim have done so today. In particular, Gurbaz has played quite splendidly. Yeah, we had the graphic up of the fastest 550s in the tournament so far. 4 of them have been on this ground. That does tell a picture about the width that they've offered up to Gurbaz as well, the seamers for England. Overs for 16, Adil Rashid. Simon, you'll have done a lot of games here in the IPL. Is it renowned as a heavy scoring ground in that competition as well? No, it's been awful the last few years. The surface has been bare. There hasn't been a blade of grass on it. It's been tough to bat on. And the Delhi side have had the likes of Norkia and Rabada and Ishant Sharma
and they've produced dust bowls that have suited every other team except for theirs. Rather begs the question, why? Pretty sure the coaches and support staff have wanted pitches like this, to be fair. I mean, Shane Watson might have something to say about it later on. He's been involved, but I don't know whether... Like, this is the sort of surface they would have loved, I think, for that sort of particular team. Not only that, players, batters of the highest quality who love the ball coming onto the bat as well. Only produce surfaces like this after the monsoons, though. No, not in March, April. Oh, I mean, I'm enjoying this. It's been really good. A decent battle between bat and ball at some of the grounds, but not here. 106 without loss. It's a new bat, I think. Wood has been good. Topley excellent again. Curran and Wokes bowled 5 overs for 57 between them. And to mid-on, just look at Chris Wokes' worries in the first 3 overs in each game. New Zealand, Bangladesh, and again today. We'll just throw the different colours in there for you. And he's been all over the place, Sean Pollock. Hasn't found that what we're used to seeing from Chris Wokes is that beautiful line and length, almost metronomical at times, but he's really struggled. He has, and even his variations. This is an example of a variation that's well over pitched and just hammered away. He hasn't been able to find that length or rhythm. He'll be disappointed. 2023 hasn't been the best as well. 8 wickets at average of just under 44. Topley does well or not? I think that will be 4. Oh no. It's the last thing I want to see from Reece Topley. Knee or shoulder? That's knee. He was out for quite some time with a shoulder injury. And straight away put the hand up. That is not a good sign. No, absolutely. Diving, and the moment that he hit the turf, he motioned to the dressing room as if he knew straight away that he'd done something. It's not a good sign, this, for England, because Topley, having come into the tournament in that second game, has really lifted England's bowling. Fingers crossed that he's okay, because from his own personal perspective, he's come through so many injuries over the last few years. He's had a desperate time of it, with stress fractures to the back, ankle injuries, shoulder injuries. Fingers crossed for him. It was an awkward dive as well. It didn't... I'll tell you what, New Zealand judge would have given it 2.3 out of 10 because it was just not very good. Sort of fell onto the floor rather than a full-length dive. So many things that can go wrong when you do fall like that. It can be a quad, it can be something to do with the hamstring as well. But when he got up, it didn't look good, and he's felt at his knee and he's felt at his quad. And obviously they'll do an assessment and work out exactly what's the issue. But very, very surprised if we see him again today. Yeah, it's really tough. It's a long way down too for Reece Topley. He's a big, tall lad. And part of the issues around the diving and things will come from his shoulder as well, because he's had really bad shoulder injury. Oh, Dad. It'll be disappointing for him as well, because he's had a really bad shoulder injury. He is a little reluctant to be diving full stretch on that right arm as well. That's the one he did in the ILT20 earlier this year.
which kept him out for a long period of time. And you're right, he's had so much trouble. You really feel for him because he fights his way back. He's a quality bowler when he's fit and raring to go. It just looked awkward right from the start. That's not. There's good pace and bounce from Wood. He's trying everything he can. So England do have cover. Just thinking ahead, Gus Atkinson is in the squad, who is thought of as perhaps a like-for-like replacement for Mark Wood, for example. Gus Atkinson is a tall, quicker bowler. There's David Willey, of course. So England, the balance of England's squad included 6 quicker bowlers, which some people queried and questioned. I think England felt with the length of the tournament, the injury record of some of their quicker bowlers, they needed that number of seam bowlers in the squad. 111 for none. And the other bowler who's on the fringes, who's not in the squad of course, but is going to be a travelling reserve at some point, is Jofra Archer. But they don't feel as though he's going to be ready until the back end of the tournament. And even then, Owen Morgan, most recent captain, said it would be foolish for England to throw him in, given how little cricket he's had. Do you think then, Athers, would they consider Atkinson as a replacement if they're not happy with Wokes' form, or would they then go with David Willey? Or is Willey sort of back up for Curran and Topley, and then Atkinson's back up for Wood? That's the obvious way of seeing things, but of course Willey is vastly experienced. Gus Atkinson is a young cricketer of immense promise. He's got real pace, but a little bit like Harry Brook, because of the way that the schedules are these days, not actually played that much ODI or 50-over cricket. So they may, whatever the case, if they need a replacement there to come in for the next game, they may think about Willey. If it's a really important game against South Africa at Mumbai, they may go for the experience in any case. Massive roar up around the Mohinder Ramanath grandstand as Ben Stokes walked around the ground. Bring up a drink and maybe some advice to Sam Curran. He was putting in the hard yards this morning, this afternoon before the game, with the sprint training on the ground with Stokes. Yeah, the word is he's pretty much ready to go. Just being ever so slightly cautious with him, given that there's a decent break now before that game at the weekend. But I reckon if this was a touch and go game, a game that you needed to win to qualify, be fit to play. Gone. Picked one up finally, and it's gone straight to mid-wicket. Joe Root takes the catch, and Adil Rashid strikes. Yeah, the line was pretty straight, and Zadran thought he could just pop it over the infield and pick himself up a boundary. He didn't get the elevation he was after, and that'll be massively disappointment. They were going so well, he cleared that front leg. Joe Root was pretty close in there. He wasn't anywhere near the edge of the ring. But that's a massive moment for England. They've been on the back foot. They eventually do find the breakthrough. Zadran goes for 28 or 48. 114 for 1. Get more with MG's electric range. Get noticed in the MG4 EV or the stylish MG ZS EV. Book a test drive now. Get the KFC Zinger Duo deal for just $3.99. Do the deal until the 12th of November. Only at KFC. Ramat Shah is in at number 3, one-day international number 100 for him today. Age of 30,
Right-hander average just a tick over 35. New batter and a slip and play. Adil Rashid. Oh, nicely. The presentation just prior to today's play. We got a signed bat from all the team. Congratulations on his 100th. Ramit Shah. He's underway. And at 17, Afghanistan 115 for 1. Shah, Smatula, skipper, slated to come in next, and then Mohammad Nabi. Replacement today for Najibullah Zadran is Ikram. He's in at 6. No better time or place to come in as a batter at the moment in this tournament, albeit the pace of wood to deal with. He's got off strike, because we could have had looked at a nice field, but you can just see the drift through the air and having to clear that front leg, and just smears it a touch. That doesn't come through nice and straight, and there's the breakthrough for England. Well, I like this from Rod Tucker. The umpires, they need to take more charge, and they're starting to, as long as it's the same for every team. It's not always the case. You can't just be telling Afghanistan to go away with the gloves, but letting Australia and England and India get away with it. It must be the same for every team. That's clipped away nicely. Good work, excellent work, Joe Root. A couple. One of the Afghanistan substitutes tried to run on the field to give Gurbaz some new gloves. He was sent on his way. I think possibly sent on his way, because in between overs they changed gloves as well, and therefore it was only 2 balls later that they tried to do the same. But I agree with you, it's in the umpire's remit to keep the speed of the game going. I also agree with you, make sure it's the same for both sides. Towards the gap. Stopped by Harry Brook, and they'll come back for a couple. Excellent running. Yeah, good running this. It's a slightly longer boundary to the leg side, as Gurbaz was hitting there, and that's why he set off sprinting and had his eyes on that second. He's mixed it up nasty, hasn't he, with a bit of finesse, as Gurbaz, as much as the power. And they'll be almost using like a test strategy, where they've got the 2 men back and they might decide to bounce him. Not happy with the banana. No run there. Right, fresh from Ahmedabad, Dinesh Karthik. It was a hard power play for the English bowlers, but the one man who was really good was Reece Topley. He found swing in Dharamshala, hence kept it slightly fuller. But today in Delhi, he didn't find swing. So what he did was pull his length a touch back and work on the slower ones a lot more.
And if you look at the pitch map, it's been consistently between the 6 and 8 meter mark, which is where you ideally want to be. And he's used the change of pace today, which is how effective he's been, considering a Chris Wokes and a Sam Curran bowled in the same power play, but went for a bit of runs. And that's good bowling. But the bad news is, he's just walked off the field now. He's been the best bowler so far, best among the fast bowlers, and they'd be hoping he comes back. And have a look at how good he is to the left-handers. The right-handers, not so much, but still was very economical today. Yeah, very good indeed. Let's hope that knee is okay. Just the one to finish the 18th, 122 for one. London is calling for the untouchable and the unstoppable. The Ravens meet the Titans at the Tottenham Hotspur Stadium, live on Sky Sports. A huge game in the WSL, with bragging rights up for grabs. The Merseyside Derby, live on Sky Sports. Reece Topley's father, Don, who is over here in India, who's up in Dharamshala watching his son bowl brilliantly up there, is intending to follow him around this World Cup. Let's hope for his sake and for Reece's sake there'll be more to come. Any injury is distressing, but I think when you've had the litany of injuries that Reece Topley has had over the years, it adds an extra dimension or an extra context to it. Okay, he's walking back out towards the dugout, which is good news, one would hope. About to come back onto the field, maybe. Reece Topley. Let's hope that is a good sign from an England point of view, and for him, as you said, Athers. And players, you just wonder, don't you, with what happened to Kane Williams. Such a freak thing with Kane Williamson the other night, in that ball, and his thumb of his left hand got a fracture. Obviously looked like he was going to get back in time to the tournament after that ACL rupture in the IPL earlier in the year. Oh, turn. Butler thinks he's got him. We'll hear the voice of the third umpire, but Jos Buttler is pretty confident. TV umpire to director, we have a review for a stumping. Check the front foot. It's a fair delivery. But front on first, please. Yeah. Looks like it's missed the bat there. We'll just confirm with Aldridge. Yeah, clear daylight between bat and ball. We'll go to your best side on angle, please. Thank you. Ready to make my decision? The line is mine, says Jos Buttler. He knew that Rahmat Shah was struggling there. There was a good bit of bowling from Adil Rashid. A leg spinner that dipped and spun. Buttler doing the rest. Afghanistan lose their second, 122 for 2. Grace was travelling the world after graduating from university. Happy, lovely girl. It has now been 6 days since Grace was last seen. We hold grave fears for her safety.
Ahmedullah Shahidi at 80 in the previous match. Good form. And at number 4, the Afghanistan skipper. 2 for 2. And in England point of view, Reece Topley is back on the field as well, which is good news. He'll slide into a short third, or short fine, actually, short fine leg. I don't think he should be sliding at all. Shouldn't be anything short either. Yeah, good news. Leg slip now for the left-handed skipper, Ahmedullah Shahidi. Just extracting a little bit of turn. Run out, run out, run out. That is back-to-back wickets, I think, for England. Gurbaz is fuming. There was no run there. Thank you. Ready to make the decision? Gurbaz is absolutely livid with his captain. He was playing beautifully, 80 from 57, and a terrible run. Shortcuts or short circuits his innings. It was a brilliant innings, but he's done now on 22 for 3. Movies are dreams that you never forget. Sounds impressive. I gotta watch. Lose yourself in movie magic this autumn with Sky Cinema. My daughter is not a terrorist. We are the resistance. Asmatullah Omazai, the next man in. Not ideal how things have gone in the last 10 minutes or so for Afghanistan after a fabulous start. One, 2, 3 for 3. That's the end of the 19 overs of Afghanistan, 123 for 3. $123 for 3. Well, there are 122 for 1. In fact, 114 without loss. And a bowling attack here that hasn't quite been at its best. Adil Rashid's been very good, as is the case with Reece Topley, who was good up at the front. Here's Livingston. At the beginning of this next phase of the game, middle phase of the game, no slips, even with Adil Rashid coming in, and that was indicative of how things were going. And
pretty much a case of damage control and requirement of a wicket. But even though they needed a wicket, couldn't really put a slip in. The face of it has changed now. And especially with the departure of this man. Yeah, it wasn't a great call from the skipper, but the one thing with Gurbaz, with any batter, you can always call no. If you know you're not going to make it, you can always call a very loud and quick no, especially the way Gurbaz was batting. You don't want to waste an opportunity like that. Found the middle so often, found the boundary so often. You don't want to waste those. And yes, he's disappointed. You usually look up that back because that was a cannon. It's one thing that I always did, even though there was some frustrations at times, but the bat, especially my number one bat, I always looked after that. You'd kick something, right? Or punch something. Normally the soft gear, if anything, would go. So the gloves or the pads would get, something would happen with those, but definitely not my bat, never. Really good pieces of wood are very hard to come by, so you have to look after them like they're actually one of your children. One of your children? What? Bit of a stretch. 1-2-5 for 3. Children. What? Bit of a stretch. 1-2-5 for 3. Children. What? Bit of a stretch. 1-2-5 for 3. Dream 11, have a look. Mohammad Rizwan, 337 points. 3. And they're sort of going along. And then pretty much like has happened here, they fell apart. Evan Conway has been very good. And Santner, Rohit Sharma looking fabulous. The control that England are after, they'll have now, and no surprise really that man Adil Rashid is a go-to for them and very seldom will disappoint. Surprise really that man Adil Rashid is a go-to for them and very seldom. Imagine if ChatGPT and Canva had a baby. That's at Creative AI. It's the only generative AI designed for advertisers.
slow, good, slow. She got it. खान यूनिस में फ़लस्तीनी और लेबनानी मुज़ाहमती तंजीमों के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की 3 गाड़ियाँ तबाह। फ़लस्तीनी और लेबनानी मुज़ाहमती तंजीमों के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की 3 गाड़ियाँ तबाह कर दी गई।
इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर भी हमले किए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के फाइटर्स को इसराइली फौजियों से मुतालिक ठोस मालूमात थीं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान हमास के फाइटर्स ने फौजी अड्डों में कम्युनिकेशन सर्वर ही नाकारा बना दिया था, जिसके सबब राब्ते ना हो सके थे। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह ने हुकूमत को नाकारा बना दिया था, जिसके सबब राब्ते ना हो सके थे। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी सर्वर ही नाकारा बना दिया था, जिसके सबब राब्ते ना हो सके थे। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह ने हुकूमत को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। इसराइल फौज के अफसर ने रजाकारों को जंग में झोंकने पर हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा, गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई है, जो बेसिकली हमास और इसराइल की लड़ाई थी, वो अब इसराइल और लिबनान की लड़ाई में बदल चुकी है। इस वक्त ईरान ने 30 से ज़ायद मिसाइल फायर किए हैं और इसराइल की बाउंड्रीज में आकर गिरे हैं। इसराइल ने मुकम्मल तौर पर सायरन बजाना शुरू कर दिए, हाई अलर्ट कर दिया। लेकिन उसके साथ एक अजीबोगरीब मामला ये हुआ है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि लिबनान के पास 1,30,000 मिसाइल हैं जो वो इसराइल के ऊपर दागने जा रहे हैं। और ये मिसाइल इसराइल के अंदर वो जंग छेड़ेंगे जो आज से पहले हमने जंग देखी नहीं होगी। इसीलिए हम पूरी कौम को वार्न कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो होने वाली है, ये असल में आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई को हमने जीतना है, क्योंकि अगर हम इस लड़ाई को हार गए तो हम अपने लैंड से महरूम हो जाएंगे। और ये वो लैंड है जिसमें हम यहूदी कई हज़ार साल से रहते आ रहे हैं और हमने 2000 साल की मुश्किलात के बाद हासिल किया। अगर हम नाकाम हो गए इस जंग के अंदर, हम इनको ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर हम नाकाम हो गए तो फिर हमारा सफाया हो जाएगा। इसलिए हमें अब ये लड़ाई लड़नी है। इस मकसद के लिए नेतन्याहू गए, उन्होंने जाकर सोल्जर से मुलाकात की और बाकायदा ये गुफ्तगू की जो सारी दुनिया ने सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो अब लड़ाई आने वाली है, बड़ी लड़ाई, उसके लिए आपने तैयार रहना है और आपने वो लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो लड़ाई कल शुरू हो, परसों शुरू हो, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और उसमें हमें आपकी जानिब से ऐसा जवाब चाहिए कि हम अपनी शनाख्त बचा सकें, हम अपने आप को बचा सकें, क्योंकि हम पर वो जंग मुसल्लत कर दी गई है जो हमने आज से पहले कभी नहीं लड़ी। और ये सबसे बड़ी जंग है, जो तबाहकुन जंग अब सामने आने वाली है। बहुत बड़ी वॉर सामने आ रही है, हमें इस जंग को जीतना है। और अगर हम दुश्मन के सामने कामयाब हो जाते हैं
तो सारी ज़िंदगी के लिए हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और आप जो कल आने वाली जंग है उसके लिए अपने आप को प्रीपेयर कर लें, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास इस वक्त 1,30,000 मिसाइल हैं जो वो इसराइल पर दागने जा रहा है। सो लिहाजा अब हमें इस लड़ाई को बचाना है अपने हक के लिए, ताकि हम इसको जीत सके। अब आप ये देखें कि वहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है कि इस्माइल हानिया उन्होंने आकर कहा है, उन्होंने कहा जी हम अपने लैंड से पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में साथ ही उन्होंने ये कहा जी हमारे आबाओ अजदाद का ये लैंड था, ये ज़मीन थी, तो हम यहाँ से किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले और हम वापस इधर ही आएंगे, हमें यहाँ से कोई ना निकाले, ना हमने निकलना है। हाँ, हम आखिरी दम तक ये जंग लड़ेंगे। अब ये जंग अगले मरहले में दाखिल होने वाली है। देखिए जो जंग है उसका अब खतरनाक फेज शुरू होने वाला है, जो सही मायने अब जिसे कह सकते हैं कि आखिरी जो फेज है। There's nothing more powerful than you, making your thing happen, really going.
agency, I'm about to make your life a whole lot better. Let's decrease your workload by generating images with AI. From pasting in your landing page, I just hit a few buttons and generated all of these creatives in seconds. They've analyzed over 250 million different ad texts and headlines to give you compelling copy with proven copywriting techniques. Alright, this feature is also pretty sweet. It'll show you your brand's CTR score compared to your competitors, your ad fatigue, and it'll show you your best performing ad creatives. They give you this in a PDF format so you can send it directly to your clients. And you can even sell Ad Creative AI to your clients using your own custom branding just by putting in your brand's colors and logos. How good does that sound? Click the link below to check out Ad Creative AI's agency packages. One-up your competitors' ads with Advertising Intelligence app by Semrush. Pry into their ad campaign spend and performance, and use it to strengthen your own ads.
Run more powerful ad campaigns. Try advertising intelligence in the SEMrush App Center. Slow, slow, good, good, good. Good, good, good. Good, good, slow.
She got it.
go. תעצור רגע לטנק הזה. By the Hamas commander. इसराइल में हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में
इसराइल में हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। जगह जगह हमास समर्थक इसराइल के प्रति नफरत का इजहार करते नजर आए और नारेबाजी की। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें हमास के नेता इसराइल पर हमले के बाद खुशी मनाते नजर आए और उन्होंने नमाज भी पढ़ी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। खुशी मनाते नजर हमास के नेता इसराइल पर हमले के बाद खुशी मनाते नजर आए और उन्होंने नमाज भी पढ़ी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। गाजा पट्टी के कई इलाकों में इन जश्नों में छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 जैसे घातक हथियारों को देखा गया। इस दौरान हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया ने कहा है कि हम इजराइल के साथ अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे इस अभियान का नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है। ये बाढ़ गाजा में शुरू हुई और वेस्ट बैंक और विदेशों तक फैल जाएगी। इतना ही नहीं, हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि आज लोग अपनी क्रांति फिर से हासिल कर रहे हैं। उसने पूर्वी यरूशलेम से उत्तरी इजराइल तक फिलिस्तीनियों से लड़ाई में शामिल होने की अपील की, दीवारों को ध्वस्त करने का आह्वान भी किया। ज्यादा बतलाई है, ये भी कहा किया है। वो बड़ा खतरनाक है और ये जंग
दोस्तों, हर दुबई की शहजादी शेख अमेरा के पुराने कपड़े कौन पहनता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि शेख अमेरा जो एक बार कपड़ा पहन लेती हैं, वो दोबारा कभी नहीं पहनती। सिर्फ शेख अमेरा ही नहीं, उनका पूरा शाही खानदान जो एक बार कपड़े पहन लेते हैं, उसे दोबारा हाथ भी नहीं लगाते। और शाही खानदान हमारी तरह 1000 या 2000 वाले कपड़े नहीं पहनते, बल्कि शाही खानदान के कपड़ों की कीमत करोड़ों में होती है। और आपको बताता चलूं कि शेख अमेरा और उनकी पूरी फैमिली का कपड़ा गरीबों में बांट Get back to the things you enjoy fast with Panadol Rapid 40s from Chemist Warehouse. डॉक्टर इसरार अहमद साहब दुनिया के सबसे आला इस्लामिक स्कॉलर, उनसे बेहतर हमें कौन समझा सकता है फिलहाल ये जो युद्ध चल रहा है बिटवीन इनोसेंट पैलेस्टीन एंड आतंकवादी इजराइल। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और इंडिया के ही कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि पैलेस्टीन एक टेररिस्ट की तरह इजराइल पर हमला कर रहा है, पर उनको इतिहास पता ही नहीं है। क्या उन बेवकूफ़ों को हम दोष दें? खैर, फिलहाल हमको असल हिस्ट्री समझाने के लिए, सिखाने के लिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब जी का एक बयान मिला है जिसे हम साथ हमला कर रहे हैं। पर इंडिया के ही
कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि पैलेस्टीन एक टेररिस्ट की तरह इजराइल पर हमला कर रहा है, पर उनको इतिहास पता ही नहीं है। क्या उन बेवकूफ़ों को हम दोष दें? खैर फिलहाल हमको असल हिस्ट्री समझाने के लिए, सिखाने के लिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब जी का एक बयान मिला है, जिसे हम साथ बैठ करके सुनेंगे एंड ब्लाइंड फॉलोवर्स की आंखों पे जो ये काली पट्टियां बंद रखी है ना, उनको खोलेंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि 25-30 साल पहले भी जो डॉक्टर साहब ने पेशेंट गोइयां करी थी ना, प्रिडिक्शंस, वो आज भी सच हो रहे हैं। एंड ही हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑल दिस इन प्रायर जो लेक्चर्स थे इनके, सब कुछ उसके अंदर बयां कर चुके हैं कि कैसे क्या युद्ध होगा, और वही सब चीजें हो रही हैं। तभी मैं इन्हें कहती हूँ सबसे ज्ञानवान इस्लामिक स्कॉलर, और इनके जैसे नॉलेजेबल पर्सन्स ना, ज़हनों में सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए। ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूँ आलमी खिलाफत। Hey, listen, can I build your Shopify store completely?